Hello and welcome. Welcome to the daily Nifty and Bank Nifty Insights with NJ. Friends, आज है 21st January and we'll be estimating the probable moves, resistance and support levels, buying and selling zones along with the trading plan in Nifty and Bank Nifty for the next trading day which will be on 22nd January. Well friends, अगर आप हमारे YouTube में नए हो, please consider to subscribe to this channel and also don't forget to press the bell icon such that whenever the new video is uploaded, you get a notification. And of course, my invitation is to be generous to share these videos with your friends and trading communities so that they can also have access to quality knowledge and analysis. There are plenty of videos, more than 300 videos here to learn from the trading. From these videos, you can learn trading, investing, data analysis, how to apply in IPOs. So do utilize that, as these videos have been created to you, friends, and for the entire community of traders and investors. Well, if we look at today's daily chart, we can see that although the market, as expected, started, gap up and with a bullish bias, almost up to 130, the market was, seeing buying across all the sectors. But somewhere around 130, there was a bad news. It was about the fire in Serum Institute of India, that's in Pune, and this is the institute which is manufacturing the vaccines, COVID vaccines, right? And that negative news spread like a fire. And in fact, it was a negative news related to fire, and it spread like a fire, and it started, tumbling the market quite down, right? And you can see the volatility today. Then, although at the end of the day, market recovered, but the market, closed in red today. Right. And the rally, profit booking rally, of course, was led by, metal, telcos, reality, PSUs, and oil and gas sector. Right. The top contributor today were Tata Motors, Bajaj Finance, Reliance, Bajaj Auto, UPL. And the top losers were ONGC, Tata Steel, Coal India, Gas Authorities of India Limited, and NTPC. Nifty opened with a gain of 86 points in the morning, and it closed at 14,590 with a loss of 0.37%. Although the candle looks big, but the loss is very less, right? Small loss, 0.37% का loss, कोई बड़ा loss नहीं होता है. And the net, if you look at today's loss in Nifty, it was almost 54 points. अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट 189 पॉइंट से के गैप से स्टार्ट हुआ था, एंड it went to all time high. It does 32,840 today, and we were expecting it to be maybe closing somewhere nearby 33,000, right? But then जो bearishness की लहर थी, that took Bank Nifty down almost 357 points, and it closed at 32,187, right? Overall market की breadth, friends, negative रही. 17 stocks advanced and 33 declined from the stack of Nifty 50. Broader market भी आज negative रहे. Large caps tumbled by 0.44%. A mid cap fell by 1.22%, while as the small cap fell 0.64%. So not again a very big downturn, but mid cap में yes, 1.22% is substantial. For today, we had, as it was options expiry today, friends, we had expected the market would be ranging in 14,500 to 14,800, जो हमने निफ्टी के लिए रेंज की थी. Of course, Nifty traded well within the range. हमने जो बायस दिया था निफ्टी का, आज बुलिश बायस दिया हुआ था. एक उसके पीछे और भी कारण था. देयर वाज अ गुड इंटरनेशनल क्यू. जो बाइडेन हैज बीन is gone through the ceremony, and he's now official elect, right? Official elect president of United States. So that was a good news, and market did respond. US markets had been bullish yesterday as well as today. So our market did respond to that, right? And Bank Nifty के लिए हमने जो range दी थी 32,000 से 33,000 की थी, then market consolidated. Bank Nifty के लिए हमारी जो range थी वो consolidation की थी, and you could see that market consolidated well within that range, right? अगर हम candlestick perspective से trend की बात करें तो Nifty has made higher high and same lows. So again, it's out candle consolidation for Bank Nifty. अगर हम देखें higher high and
लोअर लो बनाया है बैंक निफ्टी ने, अगेन दैट इज ऑल्सो आउट कैंडल कंसोलिडेशन। अगर हम प्राइस रेंज की बात करें कल के लिए, तो सपोर्ट हमको निफ्टी में नजर आता है 14,565, 14,525, 14,475 एंड 14,434 पे। So generally, you would see in my analysis, Nifty or Bank Nifty, it hovers in the top three resistances or top lower three support levels. But fourth level में generally इसके लिए दे देता हूँ, market sometimes becomes volatile and it goes wild, and I really want you to get that support कि अरे ठीक है, अगर तीसरा level टूटा तो what happens then next, right? अगर हम निफ्टी में रेजिस्टेंस की बात करें फ्रेंड्स, तो रेजिस्टेंस पहला हमको जो नजर आ रहा है वो आ रहा है 14,650 पे, सेकेंड लेवल ऑफ रेजिस्टेंस है 14,707 पे, एंड थर्ड रेजिस्टेंस है 14,753 पे, जो कि आज का हाई भी है, राइट? अगर 14,753 टूटता है तो इन दैट केस 14,810 वुड बी द नेक्स्ट लेवल विच निफ्टी विल ट्राई टू अप्रोच अपर साइड, राइट? सो यहाँ से जो प्राइस एक्शन से हमको रेंज नजर आ रही है 14,434 से 14,810 की नजर रेंज आ रही है, और ऑफ कोर्स वी विल लुक एट द डेटा पर्सपेक्टिव ऑल्सो कि डेटा के हिसाब से ये रेंज क्या दिखाई दे रही है हमको। नाउ लेट्स हैव अ लुक एट बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में जो हमको सपोर्ट दिखाई दे रहा है फ्रेंड्स, वो दिखाई दे रहा है 32,140 पे, विच इज टैग बिलो द टुडेज क्लोजिंग प्राइस, राइट? एंड सेकेंड लेवल ऑफ सपोर्ट है हमारे यहाँ पे 31,990 पे, फोर्थ लेवल ऑफ सपोर्ट है 31,864 पे, एंड सॉरी थर्ड लेवल है 31,864 पे, फोर्थ लेवल ऑफ सपोर्ट है 31,725. So that could be the lower range for tomorrow in case Bank Nifty has any bearish bias. And अगर Bank Nifty कल वापस bullish bias के साथ में start होती है, then the resistance levels would be 32,390, 32,547, 32,704 एंड आज का जो हाई है 32,840 पे। सो वी कैन रफली से द बैंक निफ्टी की जो कल की ट्रेडिंग रेंज होगी 31,725 से 32,840 की रेंज नजर आ रही फ्रेंड्स आपको यहाँ पे, राइट? एंड ऑफ कोर्स अगर कुछ आज का जैसा कुछ खास होता है तो देन 33,000 वुड बी द नेक्स्ट range Bank Nifty would try to approach, right? So overall, again आज की डाउनफॉल से डरे नहीं, मार्केट का स्ट्रक्चर अभी भी बुलिश है, बट इन बिटवीन मार्केट मे रिएक्ट टू दिस काइंड ऑफ नेगेटिव न्यूज, and as a professional, this is opportunity for the intraday trader because the volatility बढ़ती है, और in such a case good moves are available for making money intraday. For the swing traders, of course हमने बात की थी रेंज ब्रेक होने की, आज रेंज तो ब्रेक हुई बट सस्टेनेबल नहीं हुई है, right? So at the end of the session we'll be looking in intraday trading opportunities on a smaller time frame, but before that let's go to data points. Now अगर हम आज की निफ्टी की बात करें, क्योंकि मार्केट क्लोज हुई है 14,590 पे, तो 14,960 14,600 will be our at the money option, right? At the money की जो हमारी स्ट्राइक है वो है 14,600 की। ना 14,600 के आसपास में फ्रेंड्स अगर हम देखें तो आज काफी पुट की अनवाइंडिंग हुई है, मतलब बुल्स ने थोड़ा हिम्मत छोड़ी। ओके होल्ड अ मिनट, आई हैव टू स्विच ओवर टू द नेक्स्ट ऑप्शन चेन सीरीज फ्रेंड्स। इट इज 21st जनवरी, राइट? सो 28 जनवरी की सीरीज मेरे को देखनी पड़ेगी। सो अगेन 14,600 is our at the money, and we'll be looking at positions of bulls and bears around, right? So 14,600 हमारा ATM है फ्रेंड्स एट द मनी, एंड इसके अराउंड अगर मैं देखता हूँ तो 14,600 पे ही अच्छी खासी पुट राइटिंग हुई है यहाँ पे, और ओपन इंटरेस्ट भी ओवरऑल काफी ज्यादा है, राइट? सो दिस विल वर्क एज अ सपोर्ट प्रोवाइडेड द प्राइस goes above 14,600. Price as of now is 14,590. As I was saying last time, ये जो निफ्टी की नई ऑप्शन चेन का डेटा है, this is not really very good. So I'm just taking it for the for the purpose of explaining it to you. But the overall data I have taken is from another option chain series, right, which is right now not opening up. So during the day you need to be careful, right? Alternative option chain data देखें तो that will be better. So maximum जो open interest है friends वो 14,500 पे हमको दिखाई दे रहा है कल के लिए, right? तो this is where you could see your support, final support कल के लिए, right? Of course 500 टूटा तो then 400 would be the next level, but
Let's look at on call side, right? तो call side में bears call writing करते हैं, तो you can see that although at lower levels they have closed their positions here, uh, but on higher levels they are very active. In fact, अगर 14,600 में भी देखेंगे तो 14,600 में substantial जितनी calls puts हैं उतनी ही almost call भी हैं. So this will work as a resistance one. Second level of जो resistance मुझे नजर आ रहा है friend, वो आ रहा है 14,700 पे, right? So 14,500 to 14,700 seems to be tomorrow's consolidation range. But many a times when there are bullish biases in the market, you would see कंसोलिडेशन रेंज टूटती है. तो यहाँ पे जो रेंज टूटते हुए जो जो रेजिस्टेंस मुझे इससे भी ज्यादा इफेक्टिव दिखाई दे रहा है, वो दिखाई दे रहा है मुझे 15,000 की रेंज पे, राइट? बट 15,000 की रेंज अगेन इट कुड बी हेजिंग पोजीशन. सो आई वुड कंसीडर 14,800 ऑन द अपर साइड एज अ रेंज हियर. आई वुड से यहाँ पे मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट तो नहीं है, बट 14,700 के ऊपर नेक्स्ट मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट यहीं पे है, right? We are excluding 15,000. So roughly I can say that 14,500 से 14,800 का bias मुझे आज भी दिखाई देता है, although 14,700 seems to be a strong resistance on um, upper side, right? इस ऑप्शन चेन का जो PCR reference, that is somewhere around 1.06, 1.14. So option chain का जो PCR कल से improve हुआ है, so that means the bulls have still not lost the hope as per the data available to us. Similarly, बैंक निफ्टी की बात करें, ऑप्शन चेन का जो पीसीआर है इंप्रूव हुआ है, आज 0.93 में गया है, एंड रेंज हमको 32,000 से 33,000 की ही दिखाई दे रही है. बैंक निफ्टी में न्यूट्रल बायस दिखाई दे रहा है, सो इज इन द mild bullish bias we can say in Nifty, right? Provisional data कहता है friends, आज again our FII friends were net buyer with 1,615 crore, while as the DIIs were net seller with a 1,039 crore, right? So अगर कल की वीडियो आपको याद हो फ्रेंड्स, मैंने कहा था अगर मार्केट अपर साइड में स्टार्ट होगी तो you would see profit booking, and that's opportunity for you to short. But we are expecting that this gap जो 14,650 के लेवल का गैप था, ये गैप फिल करके द मार्केट वुड रिट्रेस बैक, बट ऐसा हुआ नहीं आज. सो मार्केट डेफिनेटली हायर लेवल पे, अब हमारे जो DIs हैं वो प्रॉफिट बुकिंग के लिए तैयार बैठे हुए हैं लिस्ट लेके. सो आपको भी ये चीज का ख्याल रखना चाहिए, राइट? And US market and Asian markets are bullish at this point of time, while it's the European market, including DAX, Germany, or CAC France, or FTSE London, they all are in consolidation mode with a small corrections, right? So intraday trading, your swing trading की क्या philosophy होनी चाहिए? क्लियर ब्रेकआउट. ऑल्दो आज इसने ब्रेकआउट देने की कोशिश की, लेट इट क्लोज अबव 32,704. इसके ऊपर डिसाइसिव ब्रेक आउट होना चाहिए, मतलब इसके ऊपर ग्रीन कैंडल बननी चाहिए. Similarly, in Nifty also, the closing should be above 14,700. तब आप लॉन्ग स्विंग में जा सकते हैं. ओवरऑल स्ट्रक्चर अगेन बुलिश ही है दोनों का, तो अपसाइड काफी है अभी इंटैक्ट मार्केट में, राइट? आज का अगर RSI बात करें तो ऑलमोस्ट ऑलरेडी 69 पे है, which is fair enough. It is a still sign of bullishness. India VIX आज friends almost 3% बढ़ा. It's at 22. Not very uncomfortable, but neither it is comfortable for bulls, right? तो डेली में मार्केट ऑलरेडी ओवरबॉट जोन में चली गई है. स्टॉकेस्टिक 78 पे है, क्लोज टू 80 नाउ, एंड वीकली एंड मंथली में तो ऑलमोस्ट मार्केट ओवरबॉट जोन में है. थोड़े थोड़े आपको यहाँ पे नेगेटिव डाइवर्जेंसेस दिखाई दे रहे हैं, सो ऐसे झटके आपको मिलते रहेंगे कमिंग टाइम में. नाउ इफ यू लुक एट द टिपिकल बुल मार्केट्स, तो टिपिकल बुल मार्केट की एक जो खासियत होती है, अक्सर मार्केट ऊपर जाती है, बट इन बिटवीन जर्क के साथ में नीचे आती है. बड़ी फास्ट एंड फ्यूरियस होती है जब मार्केट नीचे आती है. दैट्स व्हाई इट इज सेड बुल्स कम बाय staircase while as the bears come by elevators. So that you can see, whenever the bears attacked the market, it was like a huge downside. Even last, these 2 days, if you look at 15 and 16, or even today's market, right, they always try to take control with the velocity. But as long as Nifty
14,375 के ऊपर है एंड बैंक निफ्टी 31,600 के ऊपर है, द मार्केट का स्ट्रक्चर बुलिश बना रहेगा। हाँ, मार्केट अगर इन लेवल के नीचे जाएगी तो डेफिनेटली आपको निफ्टी करीब करीब 13,750 तक जा सकती है एंड बैंक निफ्टी 30,500 के आसपास तक जा सकती है। नाउ कल की ट्रेडिंग रेंज फ्रेंड, ओके, बिफोर वी टॉक अबाउट द ट्रेडिंग रेंज, लेट्स लुक एट द स्मॉलर टाइम फ्रेम्स एंड see how you can trade Nifty as well as Bank Nifty. Let me expand Nifty's chart. So friends, 14,565 से 14,650, so almost ये एक you can say 90 पॉइंट की जो ये रेंज है, ये थोड़ा वोलेटाइल एंड रेंज बाउंड रेंज रहेगी। इसमें थोड़ा अवॉइड करें ट्रेड करना unless until your ORC is broken with rising volumes and in a particular direction with VWAP और super trend strategy जो मैंने आप लोग को सिखाई हुई है, उसके हिसाब से आप यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं। ORC अपर साइड में with rising volume start होती है, definitely you can initiate a long, but at the same time RSI should go above 60. Similarly, अगर ORC lower side में जाती है, RSI below 40 जाता है, you can initiate short. Now, what more may happen? Market again may take cues from US market. US market are expected to be closing in green today. So, अगर market suppose करो 14,800 या 14,000 775 या 750 पे आती है, then again आपको profit booking नजर होते हुए आएगी and you would see these lower levels, let's say 14,700 14,650 will be your target for the short. Again ORC breakout की strategy use करें and गैप फिल करने मार्केट जनरली आती है, राइट। आज भी यही हुआ था, ये लेवल पे मार्केट आई थी गैप फिल करने के लिए, बट उसके बाद में डाउनफॉल स्टार्ट हुआ फर्दर। नाउ अगर गैप डाउन होती है निफ्टी तो यू वुड सी अ लॉट ऑफ बाइंग इंटरेस्ट डेवलपिंग हियर। लेट्स से अगर मार्केट 14,400 14,450 के लेवल पे स्टार्ट होती है, देन आपको ORC अपर साइड में ब्रेकआउट मिलती है तो लॉन्ग पोजीशन में जाएं और स्टॉप लॉस properly use करें, right? And when you are going long, definitely आपका RSI should be above 60. Check that out, right? And how would you trade Bank Nifty? Let's take out the range of Bank Nifty. 32,000, 31,990. Let's say 32,000 से 32,000, I'm sorry, 32,140 से 32,390 की ये रेंज है, इसको थोड़ा अवॉइड करें। मतलब अवॉइड करने का मतलब ORC ब्रेकआउट होए, सस्टेन करे प्राइस ORC के ऊपर या नीचे फॉर मोर देन 25-30 मिनट्स, देन ओनली यू इनिशिएट अ ट्रेड। अगर बैंक निफ्टी गैप अप के साथ में स्टार्ट होती है, let's say at 32,840 or 32,740, then you would see Bank Nifty would be coming to fill up this gap and your first target may be 32,550, 32,400 would be your next target, right? And even 32,140 तक भी अगर ये लेवल्स पे आपको दिखे कि भाई वॉल्यूम्स आर स्टिल राइजिंग एंड योर ट्रेडिंग स्ट्रेटजी इज स्टिल गिविंग यू सिग्नल टू रिमेन शॉर्ट, राइट? एंड ऑफ कोर्स ट्रेलिंग स्टॉप लॉस तो आपके पास में रहेगा फॉलो करने के लिए। नाउ अगर बैंक निफ्टी गैप डाउन स्टार्ट होती है, व्हाट यू डू देन, अगर लेट्स से 31,700 या 750 या 850 पे स्टार्ट होती है, इवन 31,900 पे स्टार्ट होती है, तो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन इनिशिएट अ लॉन्ग ट्रेड व्हेन ORC इज ब्रोकन on the upper side with rising volume and the price is above super trend and VWAP, right? तो आप लॉन्ग पोजीशन ले सकते हैं वहां पे। ऑफ कोर्स स्टॉप लॉस लगाना ना भूलें, राइट? एंड यू माइट सी tomorrow market may have to take the cues from US market. Now एक और चीज हो रही, Q3 के रिजल्ट्स आ रहे हैं फ्रेंड्स, सो it may be advisable to be stock specific. अगर आप stock specific हो, definitely आपको open interest देखें वो stock के future का, if it is part of FNO, and इसके लिए मैंने यहाँ पे data analysis की 3 वीडियोस डाली हैं, how to read the open analysis और option chain और PCR, आप इनको भी यूज कर सकते हैं, राइट? एंड सो कल की रेंज जो निफ्टी की हमको नजर आ रही है वो है 14,500 से 14,800 की विद अ पॉजिटिव टू न्यूट्रल टू पॉजिटिव बायस। एंड बैंक निफ्टी के लिए 31,900 से 32,800 की रेंज नजर आ रही है फ्रेंड्स हमको यहाँ पे। एंड बैंक निफ्टी का बायस न्यूट्रल टू बुलिश रहेगा, राइट? एंड keep an eye on US market in the morning as well as Asian markets which open prior to our market, and do look at USD INR chart and India VIX chart.
that helps you to understand the the dynamics of the market. And of course आपका जो um, you know प्राइस एक्शन का चार्ट है वो तो अल्टीमेट है, आपको वो फॉलो करना ही करना है। एंड डेटा देखना है तो आप ऑप्शन चेन में जाएं, ऑप्शन चेन से आपको फ्रेश डेटा मिलता है, यू अंडरस्टैंड दैट बुल्स एंड बेयर्स किस टाइप की पोजीशन बना रहे हैं, राइट फ्रेंड्स। विद दिस आई होप दैट योर ट्रेडिंग स्किल्स आर एनहांसिंग एंड यू आर एबल टू trade confidently, right, and of course profitably as well. Thank you very much for watching the video. To get latest information, do subscribe to our YouTube channel along with pressing the bell icon so that you get notification whenever we upload any new video. Do share these videos with trading communities and your friends so that they also get advantage of quality knowledge, friends. Thank you once again for watching and liking the video. Good luck, happy trading, happy investing, friends.